Hi guys, what's up? This is Rannvijay and I'm super excited to share with you my next journey. See, there are two things that drive me. Pehli, meri gaadi, it literally takes me to places. And second, my hunger. The cherry on the top is if you get to share this journey with some people along the way, and that's exactly what we're doing here. Welcome to the first ever episode of CarKhana, brought to you by Car&Bike, India's largest network of used car stores. CarKhana एक बहुत ही यूनिक शो है, and you guessed it right, it's about cars and खाना. यहाँ मैं अपने स्पेशल गेस्ट, अपने दोस्तों के साथ अलग-अलग सिटीज में जाऊंगा, ड्राइव करूंगा और खाना खाऊंगा वहाँ की मोस्ट ऑथेंटिक जगहों पर. Bonding over our love for cars and food. What else does a person want? I am super excited. I'm sure you guys are too. Let's go get this. I love Diwali. दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, एक इमोशन भी है. ड्यूरिंग दिवाली काफी लोग कई नई चीजों की शुरुआत करते हैं, जैसे कि ये शो. ऑल्सो वी आर एट द कार एंड बाइक सुपर स्टोर, जहां पे कई लोग आते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक नई शुरुआत करते हैं बाय गेटिंग देयर फर्स्ट कार. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज वेलकम द सुपर टैलेंटेड, द ब्यूटीफुल, द एलिगेंट Raveena Tandon. Hi, how are you? Looking amazing. Thank you, so are you? Welcome to Pune. Thank you. You're a superstar actress. You're an amazing mom. Social media where you're killing it. Yeah, that's Really, due to my with it. daughter. Also, OTT, you're everywhere. Since the beginning, since you started, it's been on and on and on. You know, it's crazy and it's so relevant even today. I think one has to move with the times. And yes, I think adaptation is the basic instinct, I think. And you evolve along with. Most importantly, you have to be aware what's going around you. वो जो समय के साथ चलने वाली चीज़ है, that's the real key. समय. Now you start so young. You know you're doing so well. You're earning your own money. How did you meet your first car and what was it? Okay, so I was always very fond of driving. And I think my dad was a great influence on me. पापा का सबसे बड़ा सबक ये था कि अगर आपको अपनी पहली गाड़ी खरीदनी है तो पहले learn your car. पहले गाड़ी के अंदर and what makes it work सीखो, क्योंकि वो बहुत ही अहमियत रखता है. जब वो सब सीख लिया था and when the day I turned 18, I bought my own first car, which was actually a second-hand car. And it was somebody's sports car who he was selling off. And I bought that with my first money, my first earnings. It was a gift to myself. Yeah. Amazing. At 18? Yeah, at 18. A sports car that you earned and yourself like... And then my first new car after that was a Maruti 1000. The 1000 that became the Esteem. Oh, what a car that was. And then after that, another second-hand car was my Pajero. We used to call it the Road Rani. Road Rani. If there was a comic book like... I'd be Road Rani. Road Rani. Yeah, I'd be Road Rani. Raveena Tandon in and as... Road Rani. Road Rani. RR. Wow, I like that. Yeah. What do you think about used cars? What's your view on that? मेरे ख्याल से, और मैं समझती हूँ स्पेशली आज के ज़माने में, कि रिसाइकलिंग बहुत ही ज़रूरी है. और जिस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट जा रही है, न्यूली सेकंड हैंड जिसे बोलेंगे, वो ज़रूरी है गाड़ियाँ यूज़ करना, वापस इस्तेमाल करना. लेकिन हाँ, एक ज़्यादा अरसा चलाने से भी वो यूज्ड गाड़ी धुआं फेंकती है, तो वो भी वी हैव टू कीप इन चेक. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो गो इन फॉर समथिंग लाइक दैट. माय फर्स्ट कार वाज आल्सो अ सेकंड हैंड कार. Wow. Used car. Used is a better word, huh? It was a Lancer, if you remember the Lancer. Yes. Amazing. And उसको लेना is a different achievement because your first car. उसके बाद of course God's been kind. Now you're so much into driving. जो हमारी game हम खेलने वाले हैं यहाँ पर, that has now become very important because आज जिस गाड़ी में हम ड्राइव करेंगे वो यहाँ आप डिसाइड कर सकते हो या मैं. Okay, चलिए. Please win this. Done. I'm on your side. Okay. What simple game? चीटिंग कर सकते हैं? There's no cheating. नहीं. Okay, ठीक. There's no cheating. मैं आपको गाड़ी का जो नया प्राइस होता है वो बताऊंगा. ठीक है. आपको ये गेस करना है कि कार एंड बाइक में वो यूज्ड कार का क्या प्राइस होता है. डन. 5 में से 3 सही. ठीक है. ओके, रेडी? फर्स्ट, महिंद्रा XUV 500. ओके. ब्रांड न्यू आती है शोरूम से, 23 lakhs की. यूज्ड कार एंड बाइक पे कितने की मिलेगी आपको महिंद्रा XUV 500? आधी तो कम हो जानी चाहिए एक्चुअली.
So, what do you say? Around 12-15 के बीच में कहीं करीब 13-14. अफसोस ये सही जवाब. No, really, it's actually 15. Logical, yeah. Very good logic, yeah. Hyundai Creta, new is for 22 lakhs. Used is for. क्योंकि ये गाड़ी अच्छा बिजनेस कर रही है. What a mind. है ना? What a sharp mind. शायद अगर मैं सेल्स पर्सन होती तो मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के करोड़ में बेच दो यार. हाफ नहीं करती. 14-15 तो मांगती स्टार्टिंग प्राइस 14. फिर देखते कहाँ नेगोशिएशंस जाता. और कहाँ तक जाता है नेगोशिएशन? अगर 15-14 से स्टार्ट किया कट ऑफ पॉइंट तो 12 हो ही जाता है. मैं ये जवाब बोलूंगा सही है बिकॉज 13 लाख में you just you're saying the middle. लास्ट सवाल है, if you get this right you win. Edge of the seat literally. Honda City new is for 14 or used at car&bike will be 7, 6 or 7. So right now it's actually exactly 7. If you want to zoom in and see, Yeah, this 7, is not 7. She's very good at this game. Yeah. Congratulations ma'am. आज आपको कैसी गाड़ी चाहिए? Just go, we'll choose. चलिए. And then we go for a drive. If somebody had to get into your car, what are the 5 things that they will find? आई थिंक ज़्यादातर मैं एसेंशियल्स बहुत सोचती हूँ, अहमियत रखता है और रखती हूँ गाड़ी में. जैसे कि स्पेशली मुंबई में जब फ्लड्स हुए थे उसके बाद आई थिंक आई ऑलवेज कीप हैवी ऑब्जेक्ट विच इज़ जिससे अगर आपको खिड़की तोड़नी हो या कुछ ऐसा करना हो. wow. एक तो वो ऐसा. दूसरा खाने पीने की चीज़ें तो ज़रूर मिलेंगी. एक डब्बा मखाने का तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, सीट के नीचे, सीट के अंदर, बाहर कहीं ना कहीं. एक आईना कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन नाउ द कार्स कम विद द आईनाज, तो वो तो ज़रूरी नहीं है. फिर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब ये बताइए कि किस प्रकार की गाड़ी में आप जाना चाहेंगी, कैसी होनी चाहिए? आई थिंक जैसे मैंने आपको बोला एक ऑफ रोडर तो है ही जो मुझे पसंद है, तो कोई ऑफ रोडर हो तो अपन ले ही चलते. ओके, यू नो दैट आई एम अ माइंड रीडर राइट? आपने ये नोटिस किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. की बातें करते करते हम कहाँ आके खड़े हो गए. रवीना जी देखिए, अपने अपने राइट में देखिए. ओहो नहीं की और पूछ दिस इज द महिंद्रा थार. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडर्स. द बेस्ट पार्ट इसकी है कि इट्स इंडियन. ओके, रेडी? लेट्स गो फॉर इट. I cannot believe कि मैं जिनके गाने देखता था, देखकर डिस्को जाता था और फिर जाके होटल में खाता था, आज मैं उनके साथ जाके खाना खाने वाला हूँ. It's amazing. It's really like life does this full circle kind of situation. But let's do your favorite step. I think my favorite which step we can do while we're sitting. would be, yes, you're right. Actually, you just did it. I did You it. read my mind. ये हमारे God damn it. subconscious mind में कूट के भरा है. So it goes like किसी डिस्को में जाए, Yeah. किसी होटल में खाएंगे अभी. कोई देख लेना हमें यहाँ घूम के आए हम. I can't believe it. I can't believe it. तो Oh मैं my सोच रही हूँ कि यार ऐसी अच्छी मजेदार खुली सड़कें हैं. Yeah. आपने कुछ ज्यादा ही गाड़ी चला ली. Now I think, dude, it's time for you to hand over the wheel to me. No way. You want to drive? Excuse me, how bad is it for you to be driven by a woman? Bad? It'll be amazing. And on top, my wife drives me around, by the way. I just want to tell you. Lovely. But for Raveena Tandon to be driving and me sitting, कुछ अच्छा ही किया मैंने. All right, let's do this. So, you drive a lot. Abhi, do you go on vacation with your family and you're always like, chalo, let's get a car and let's drive? I think the best was जब हम रोड ट्रिप्स करते थे. मुंबई से कन्याकुमारी जा चुके हैं हम लोग. Wow. पूरा मुंबई से पूरा राजस्थान कर चुके हैं. एंड पापा, मम्मी, माय ब्रदर एंड आई, हम लोग 4 निकल जाते थे. Those are the best trips. राजस्थान तो हमने फिएट गाड़ी में की. जो कन्याकुमारी का ट्रिप था वो हम लोग ने एक जीप थी हमारे पास, उसमें किया. Are you a festive person? Do you Very. love festivals? I love festival and our Indian festivals तो I love. क्या करते हो आप around Diwali? What is your life? Do you say no to work? You family, friends? Yeah, parties? दिवाली के दिन तो काम बिल्कुल नहीं करते हैं.
एक तो पूरी स्प्रिंग क्लीनिंग शुरू हो जाती है घर में, दिवाली क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं, एंड डेकोरेशंस लग जाते हैं, लाइटें लग जाती हैं, प्लानिंग हो जाती है पार्टीज़ की, हर एक कज़न के घर में या हर एक दोस्त के घर में, आज तुम्हारी घर में, आज तुम्हारे घर में, आज आपके घर में, ऐसे करके बढ़ जाते हैं हर रातें। वो पूरा हफ्ता जो पार्टीज़ चलती हैं। Do you have any customs of like when in the year are we going to buy a new car? हमारे यहाँ ऑलवेज शुभ दिन पे ही कोई ना कोई गाड़ी आती है, always. Really? So it's a date? It's a numeric date or? It's no. It's शुभ not a दिन होना numeric चाहिए? date, but हाँ हमारी गाड़ियों की सबकी एक डेट है. It's all on my daughter's birthday. No way. Yeah. All our cars That's are the my same. birthday. Yeah, I know. All your cars are on. Oh, that's on your crazy. birthday, 16 So March. 1603. It's not exactly 16. All of them are a particular number which adds up to a 16. Seven. And all our cars are the same number. So we ask for that. I didn't know So I had a whole cavalcade of cars. Just on my lucky birthday. you, This is crazy. Wow. इस शो पर हाँ जी. we're gonna do a rapid fire round. Okay? And if you do well, you're not gonna get any basket. You're gonna get your food. So you better do well. Okay. सबसे पहले new cars or used cars? I mean, they're both in their own ways. Because new cars of course have that new feeling, but used cars एक aspiration value होता है जो आप कभी-कभी I think more affordable. Yeah. I mean, they give you the kind of service as well. while driving. What's your favorite song? One was a song, I mean, paying tribute to Schumacher. It's just a trance beat, and the only thing that goes in it is the sound of the rev. Yeah, and it says Schumacher. Schumacher. Yes, I know this. Yeah. Then there is another one, which is Asha Ji's Mera Pyar Shalimar, the remix version from Rahul and I. And my third one is Mahadeva. It's another trance by Astral Beats. Rate in order of your preference: SUV, sedan, hatchback, or convertible. An SUV convertible. Your favorite place that you've driven in the world? Switzerland. Manual or automatic? Manual. And that brings me to, see, we're in Pune, right? Yeah. And we are two Punjabis, and a lot of times when I'm away from home and you're busy shooting, I'm sure you miss your Punjabi food, Absolutely. right? Yeah. So I'm going to take you to a very nice, cool dhaba, because authentic Punjabi khana ढाबे पे ही मिलता है. Absolutely. Let's go. Ready? Hit it. Excited? रास्ता बताओ, चलो. आपके अंदर का पंजाबी जाग गया है? Let's go! Okay, all right. So for the Punjabi connection that both of us have, मैंने एक जगह ढूंढी है, mini Punjab in Pune. It's called Karolbaug. Perfect है जी, perfect. बिल्कुल perfect है. बिल्कुल ही जी. वो जो घर का जो खाना है, पंजाबी हाय, खाना, हाय, हाय. जिसकी क्रेविंग होती है, वो अभी पूरी हो जाएगी. Wow. What do you say? ये हुआ ना असली ढाबा. Taba. हाँ. You can't even say dhaba. You can Taba. say ढाबा. Tell me, when was the last time you went to a dhaba and you ate in a dhaba? Delhi Jaipur highway. हाँ. Yeah. These dhabas, even Delhi to Chandigarh, have this special tandoori pronte. Yeah. You know the aloo pyaz. मूली नहीं भैया गाड़ी में जा रहे हैं. It's that gobi and all that. So, are there any rituals at home कि यार कुछ भी हो जाए, वीक में आप काम करो, ये भी करो, but संडे का जो खाना होगा ये होगा? So Sunday तो family day होता ही है. अच्छा. Husband's family is Sindhi. तो ज़्यादातर कड़ी चावल और टिक्की और आलू टिक्की ये वो रहती है. These are overlapping things between the two, ना? हाँ. तो almost similar रहते हैं actually. पर it's made to see that हम सब साथ में मिलके डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं. Nearly every day. At night, yeah. Besides the children being in school, otherwise dinner is always together. I also feel like the families that eat together stay together. तो बोलते हैं. Completely. If you had to pick one Punjabi dish that's your favorite, what would that be? छोले भटूरे हुए, तंदूर का पूरा रेंज हुआ. Are you into street food? Do you eat the sev puri, the Yeah, vada of pav? course. What are your favorites? बता Like I सकते हो love कहाँ the जाएं? Mumbai sandwiches. मिठी बाई कॉलेज के बाहर वो मैसूरी डोसा वगैरह जो मिलता था. And I think Indian food के लिए nothing like urban तड़का. It's the same ढाबा feel. I mean the best Indian food I think urban तड़का से और कुछ better नहीं है. मुंबई में. भूख मेरे को भी लग रही है, but we're warming up towards it. But it's become very easy. हाँ. Apps आ गए हैं. Correct. Whatever you want, any cuisine. पहले तो होता ना कि Chinese खाएंगे Saturday को, Sunday को मंगाएंगे आइसक्रीम. Now everything is on your fingertips. Has that changed your lifestyle in a bit? No, it hasn't because I'm not very app friendly. App Friendly. friendly नहीं है? नहीं. मैं App से दोस्ती मुश्किल है.
Because आजकल I've seen households जहाँ पे घर का खाना मिलता है और बच्चा बोलता है मैं actually order कर लूँगा और वो होता है, ज़्यादातर होता है, लेकिन हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं एज अ फैमिली के रेस्टोरेंट में जाएं या तो फिर घर का ही खाना खाते हैं। मोस्टली हम वीकेंड्स को उनका जंक फेस्ट होता है। Do you cook? No. Not at all. कुछ भी? जो मैं अगर कुकिंग करती हूँ तो बाय फ्लूक वो माइंड ब्लोइंग निकल आता है and then I'm told to repeat it तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, it's a one-time thing. Yeah. I'm like an artist. तो इससे exactly it's a one-time thing. It's a piece I've made it. Exactly. What do you love feeding to people? Whatever good food. I like it when people eat good food. So. तो जब मैं आऊँगा आपके घर पे, by the way, बिन बुलाए नहीं, मतलब when you'll invite me, that is the hint. तो मुझे क्या खाने को मिलेगा? It'll be some great vegetarian for sure. Okay. And हम लोग plant protein भी काफी खाते हैं घर पे. So. Very advanced household. Yeah. Okay, we're going to have some lassi. Let's see who drinks it fast. Assi lassi lassi pissi. Tres. Go for Salud. It's a different challenge, guys. Look at you. Wow. Oh wow. क्या बात है. Excellent. Okay, I want to follow this thing. Happy birthday. Oh ho 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 ho. Wow. Oh, क्या बात है. Oh my God, that was amazing. आप तो रुक ही नहीं रहे हो. Fab. I was such bookers, no? Yeah. I'm going to stop. What's next? What are you up to? इसके बाद आप क्या कर रहे हो? A lot of क्या-क्या हो exciting रहा है? stuff. OTT, movies, etc. So it's going to be fun. And now that we know that you know about cars so much, what's the next car that you're getting? I don't know. I think now around this time, my husband has planned a surprise for me. So I don't know what's coming actually. Wow. Thank you so much. Thank you. You've been It was such a fun great day. sport. And the fact that you know so much about cars, I hope you had fun. I did. And this kind of sums it all up. But when you drive, you're actually very it's just like you own the road. Drive very well. We had a great time driving around in Pune and of course eating this amazing food here at Karolbaug. I hope you guys enjoyed this, the very first episode of CarKhana, brought to you by Car&Bike, India's largest network of used car stores. You guys keep watching. I'll be in another city with another friend of mine, driving and eating some authentic food. आप तब तक YouTube पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो and stay safe. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy New Year.